चाष छाणी देमु आज्ञा कहाँ करमु चाष करी करी हाँ ना दादन पड़ाबार पड़वा आज्ञा चाष छाणी करी चाषी लोक जदि धान बिकवा जदि एंता असुविधा नेता मैंने दरमा बढ़े दूसन 4 लाख 3 लाख टंका तांकर तो एक मंडी तो लेट रे खुलला 5 तारिख टोकन आमर मंडी चली 20 तारिख प्रशासन के चेतावनी देकर कहूँ जदि नहीं उठला राज्य रास्ता अवरोध करमु। तार माध्यम रे सरकार गोटे बड़भारी चाषी आंदोलन को ढाकरा उसको The paddy stock has arrived at the mandi and is lying there. चाष छाणी देमु आज्ञा कहाँ करमु चाष करी करी हाँ ना दादन पड़ाबार पड़वा आज्ञा चाष छाणी करी एत खराब लागला कांदी पकार पुड़ी जाए हम मोर छुआ के कॉलेज ना लगाबार फसा नहीं पाबार। This is not a drama staged by farmers. It reflects their deep pain and distress. Many are pleading for work, expressing the fear that without support, they may be forced to abandon farming and migrate as laborers. This is the harsh reality that the farmers are facing in Bolangir, where hundreds of sacks of paddy are lying unattended at the Bhaler Mandi. The problem is not limited to a single mandi. Similar conditions prevail at the Malamunda Mandi, where notices have been put up asking farmers not to bring more paddy until the existing stock is lifted. Across nearly 180 mandis in the district, farmers are facing the same crisis. In many places, paddy remains loaded on tractors for days together, unable to be unloaded or procured. The prolonged delays are putting immense financial pressure on farmers, adding to their losses and deepening their uncertainty about the future. हम खेते बहाले आगे हम सुई सुई अथा आगे मुसा कुड़ी देले न कदिनी कहते बस्ता काटी दउजन से बस्ता काटे धान भी हमर पड़ी को नुकसान होचे कदिनी कहते आ सरकार बहादुर भी धान किनबार ने कि मिलल माने भी धान नहीं उठाबार आगे हमर बहुत असुविधा हो जाई हम लाख के चाष सरकार के दे देमु जमीन सब नहीं जो हमको व्यापार करबा लागि दो कि चाकरी दो आगे हम चाष आर नहीं करू ना धान नहीं बिकले चाषी कैंसी आड़ लाख बाढ़ सुझी नहीं पारे धान बिकवाले हमको बहुत असुविधा हुई सुविधा हमको किसी सरकार नहीं दवा। As per Indian government's data, 71,815.39 metric tons of paddy was bought from Bolangir till December 31, 2025. However, as of December 31, 2024, a total of 1,43,224.21 metric tons of paddy was procured from Bolangir. This indicates that paddy procurement in 2025 has dropped by 57%, pushing Bolangir to the bottom in terms of paddy buying and selling. Meanwhile, millers have also staged protests over the issue. For the past 2 days, paddy procurement has come to a complete halt. Farmers voiced frustration with paddy stocked everywhere, starting from home to field and mandis. Following this, farmers have warned of a massive protest in the near future. Meanwhile, district supplies officials assured that everything will go well. तार माध्यम रे सरकार गोटे बड़भारी चाषी आंदोलन को ढाकरा दूसन उसको आम जो स्पेस रे बर्तमान चली आम तो आशा करूँ फेब्रुआरी 15 सुधा सरी कथा ए जो मिलो स्ट्राइक होगा टिके धीमे मिलो स्ट्राइक आम आशा कर कलअप हो आम फेब्रुआरी 15 को टार्गेट रखुचु अचिव करने। At the Puitala Mandi in Bolangir district, thousands of sacks of paddy are lying under the open sky. With farmers' procurement tokens nearing expiry, panic has gripped the farming community. खोला आकाश तले पड़ी रही हजार हजार बस्ता धान चाषी टोकन लैब सेवार लगी जहाँ फल चिंतार अच्छा चाषी जदि माने एठिक माने पहुँचाऊँ तो आम टोकनटा लैप्स हो से आनबार लगे बाध्य हो चाषी लोक जदि धान बिकवा जदि एंता असुविधा नेता मैंने दरमा बढ़े दूसन 4 लाख 3 लाख टंका सांग सांग पैसा मिलवा ताकटा आम जदि चाषी धान द्वारा नहीं बिकी पालू आज्ञा
ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆମର ମଣ୍ଡିଟା ମିଲର୍ସ ଲିଫ୍ଟ नहीं करवा ତାଙ୍କର ତ ଏକରେ ମଣ୍ଡି ତ ଲେଟ୍ରେ ଖୋଲିଲା 5 ତାରିଖର ଟୋକନ ଆମର ମଣ୍ଡି ଚାଲିଛି 20 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଖୋଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇ ଯେନେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଟୋକନ ଲେଫ୍ଟ ସେବାରକେ ଯାଉଛି ସେଟା ଆମ ବେଶୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ରହିଗଲା ନା At the Boksama Mandi in Kuchinda subdivision, paddy was not lifted in the last 2 weeks of December 2025. As many as 10,000 paddy sacks were lying in the mandi. Now all eyes lie on the government's decision and efforts to streamline the process so that the paddy procurement is completed without any further issues.